हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स। मैं एक्टिविटीज़ ले रही हूँ, बना रही हूँ वीडियोस इलेक्ट्रिसिटी 12th चैप्टर के, और ये मेरा थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग 12.3 एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। तो इस एक्टिविटी में हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहते हैं भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एंड अगेन वी आर हैविंग दिस स्लॉट, दिस गैप, एंड इन दिस गैप वी आर फिलिंग इन आइदर अ स्मॉल लेंथ वायर और अ बिगर लेंथ वायर और अ थिकर वायर और अ थिनर वायर, राइट। तो अब ये हमारे को क्या बोलता है, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, डज द करंट डिपेंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड वेन एवर वी आर गोइंग टू प्लेस दिस एनी वायर वन ऑफ दीज, वी आर गोइंग टू बी seeing or observing the changes in the ammeter reading, right? The current flow we are going to be noticing now in this electric circuit. तो इसमें हमारे पास पूछता है, does the current depends on the length of the conductor or does the current depends on the area of the cross section of the wire? So भाई मैं बोल रही हूँ कि करंट जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर ऑल्सो. बट हाउ if the current is more over here or if the current is lesser over here, if the resistance is more over here or the resistance is high over here, what they are talking about, let us see. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई flow of current depends on its length plus area of the wire. Just now I've said to you like that, right? Increase in the length of wire is directly proportional to its resistance and it's inversely proportional to the current flow. इसको हम कैसे समझेंगे भाई, इसको हम समझेंगे ऐसे. तो यहाँ पे चिल्ड्रन ये समझ लो, जैसे कि हमारे पास टिकट काउंटर होता है, राइट. टिकट काउंटर फॉर अ मूवी और अ मनी काउंटर you can say in a mall. So obviously when you're roaming in a mall or when you're sitting in a what happens in a movie hall, nothing, you guys are not crowded, you guys are not bumping into each other, nothing is happening, right? But the moment you reaches to a gate where you have to now exit from the movie hall, or the moment you reaches to the money counter, you guys starts to crowd, right? You guys bump into each other, there is no much place and you guys have to stuff yourself into a very teeny meeny space, right? And so the same thing happens over here. How the resistivity is high or low, if the electrons are getting more space, है ना, if they are able to freely move, then obviously they are not bumping into each other, they are not creating friction, resistance is going to be low. If there is no space at all, then the electrons are crowded, they are bumping into each other in order to find their way out, right? Or in order to find their way to flow properly in a direction, unidirection. Because of that reason, as they are bumping into each other, the resistivity will be higher, and as the resistance is higher, automatically the current will be low, right? नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 किलोमीटर हाईवे को आई एम सेइंग दैट 2 किलोमीटर width was is same only. Now I am just telling you that this highway was previously of 5 kilometers, now it is of 10 kilometers. So obviously as the width is going to be this much, those 1000 people are going to be staying crowded in the 10 kilometer length also, right? But if I'm going to increase it to 100 kilometers, what will happen? The resistivity or the crowdness will decrease, right? And the people are not going to be clustered anymore. So that is what they are saying. As the resistivity is more, what is happening? It is directly proportional. Length is directly proportional to resistance. How I'm going to show it, or how I'm going to write it? This is my Ohm's law formula, right? V is equal to IR. But over here we are not talking about. Remember, children, we are talking about resistance and we are talking about current flow. Okay, we are not talking about this thing, potential difference. As we are not talking about the potential difference, it's going to remain constant, है ना. As it going to remain constant, length is becoming directly proportional to the resistance, right? है ना. अब यहाँ पे हम लोग लिखने का हम लोगों ने ऐसे लिख दिया. तो इसमें हम लोग क्या, हमारा नटशेल हमारा क्या आता है, नटशेल हमारा ये आता है, whenever there is a length increasing, that 5 kilometer highway becomes 10 kilometers. If it becomes 10 kilometers also with 2 kilometer width, obviously my resistance is going to be increased. As the resistance increased, my current flow will decrease. Understood now children? लोग आगे सेकंड क्वेश्चन पे. भाई सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, does the current depend on the area of the cross section of the wire? So obviously बात है, area of the cross section of the wire कौन सा होता है भाई, हमारे पास वायर ये है, तो लेंथ की हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना.
ये मेरा लेंथ हो गया चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली दिस लेंथ में माई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर प्रोन टू बम्प इन टू ईच अदर, राइट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ऑब्वियसली देर इज मोर प्लेस ओवर हियर लाइक माई मॉल, राइट. दिस इज गोइंग टू बी माई ticket counter or my money counter, right. Over here there is more cluster, the people will bump into each other more and they will be more crowdy, but over here the people will not bump into each other. Why? Because there is more space, है ना. So they can free easily. So obviously when they can freely move, the resistance will be low, and if the resistance is low, obviously the current will be high, है ना. Or over here, as there is no place, the people will be crowded, and as the electrons are going to be crowded, they are going to bump into each other. As they are going to bump into each other a lot, the resistance will be lot, है ना. And as the resistance is more, the current will automatically decreases. ठीक है, समझ में आया. So obviously in the length this is what happening, है ना. And in the area of cross section this is happening. So obviously R is going to be inversely proportional to the area, है ना. अब area क्योंकि is inversely proportional to R, so what is directly proportional to area? The directly proportional thing is my current, right. That's what I've told you right over here, है ना. If area is increasing, current will increase. If area is not there, current is decreasing, right, है ना. So that is what we are reading over here. Resistance is indirectly proportional, current is directly proportional, है ना. Result क्या है? Whenever there is क्या कहते हैं this thing, cross section area is there, then the current flow increases, the resistance decreases. क्या एक्टिविटी शो करती है? ये शो करती है कि भाई हमारे लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इफेक्ट्स द करंट फ्लो एंड रेजिस्टेंस टू. ठीक है ना. दिस एक्टिविटी इज शोइंग दिस थिंग. नाउ व्हाट इज दिस? एज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, A becomes equal to I, right. That's what I have said you over here कि है ना एरिया ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है ना. आई करंट को हम लोग कैसे शो करते हैं? करंट को हम लोग आई से शो करते हैं, ठीक है ना. तो आई हम लोगों का ऐसे हो जाएगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया एंड द करंट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो आई से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड रेजिस्टेंस जो है वो एरिया से भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट्स व्हाट वी हैव रेड ओवर हियर एंड हियर, राइट, है ना. So we can write it like this, है ना. Hence this and this becomes equal. So this formula also states this only, and this also, this formula or this equation or this writing also proves this only. Now अब यहाँ पे क्या लिखा है? थिक वायर थिक वायर है हमारे पास चिल्ड्रन. अब ये हमारे को लेस करंट कैसे शो करेगी? तो देखो भाई यहाँ पे आ जाओ. मैंने यहाँ पे बोला था ना, आई हैव टोल्ड यू, राइट, दिस इज़ द थिन वायर एंड दिस इज़ अ थिकर वायर, राइट. तो थिन वायर को अगर मैंने 1T ले लिया तो थिकर वायर मेरा क्या है? 2T है ना. लेंथ मेरा क्या है? 1L है. तो डबल लेंथ मेरी क्या हो गई? 2L हो गई, है ना. तो अब मैं इसको करंट में कैसे शो करूँगी? कैसे मैं प्रूव कर सकती हूँ कि भाई यहाँ पे करंट जो है इधर जो है वो इससे भी ज़्यादा कम हो रहा है ना. रेजिस्टेंस इज़ हाई एंड करंट इज़ लो, लाइक दिस. I have taken 1L and I am dividing it with 2L. I am getting 0.5 amperes. Understood? So this is how I am showing you that current flow is less and resistance is high. If the current flow is less, automatically the resistance will be higher. Now अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2A है. 2A will also give 2I. अब मुझे पता चल गया यहाँ पे A is equal to I है, right. If obviously if my area is increasing, my I will also increase. That's the reason if my cross section will increase, my current will also increase. If cross section decreasing, my current will also decrease. So ammeter changes become double as flow current is more in thicker wire, means more cross sectional area, and ammeter reading becomes again changes and it becomes less as the flow of current decreases. Why? Because in a lengthy wire there is more resistance and there is no cross sectional area like this one, है ना. अब हम लोग इधर देख लेते हैं. ये डायग्राम मैंने यहाँ पे एक बना रखा है, पर ये मैंने लास्ट में इसलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों को जो है वो एक तरीके से समझा सकूँ, राइट. अब नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग. देयर इज़ मोर पाथवे, देयर इज़ लेसर पाथवे, है ना.
same pathway but more distance. Obviously same pathway will be having lesser resistance, same pathway more distance means more resistance, lesser current in comparison to this one. Understanding, children? I hope you guys are understanding. I'm keeping my camera steady so that you guys can make notes. Please do like, share and subscribe, and write down in the comment section below how you're liking this video. This is me, Alice Raj, and I'm signing off.